Okay, Ji, in the last class, we were discussing that how we can show a number in 2's complement, binary number. And I discussed there are 3 methods that you can do to convert your number, identity number, identity integer into 2's complement. One method I discussed was that you convert a number, a negative number, for example, into a binary value and then flip all after finding out from the right side the first bit on, leaving all those, flip all on the left side of first one. So then you find a number. For example, if I just give a quick example here, that if I want to convert -8 denary number, so first I will find out the 8 value, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and -128. So first of all, I find the 8 answer, but sorry, the representation of 8 quickly. And this is the first step. So first find out the positive 8 and then flip all after finding the first one from the right side. So you just bring down the first these as it is and then flip. So this is -8. One method of doing it. The other method is that which I want you to actually practice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, -128. So let's suppose you want to show -64 as 2's complement. So how to do it? First of all, subtract out of 128 64. What do you get? You get 64. You get 64. Now what you do is switch on the first negative, because it is a negative number. Switch on -128 on, and all those positive values which are to be switched on. So here only 64 is to be turned on. The rest you do not need to turn on. So if you check out, this will be -64. Check it out. -128 and plus 64. You will find out -64, and that's what you wanted to display. This is the quickest and easiest method, but we as the CS students should know all of these. Yes. सर इसी मेथड में अगर आपने 64 शो कराना है तो तब भी आप -128 होगा रजिस्टर नो पॉजिटिव 64 को 2's complement दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस ये करना है. ठीक है पॉजिटिव 64. लेकिन सर हमेशा 2's complement में जब हम रजिस्टर बनाएंगे तो 128 वाली वैल्यू जो होगी हमारी वो माइनस में होगी. 128 नहीं, लास्ट बिट. अगर 8 बिट है तो -128 आएगा. अगर 4 बिट है 1, 2, 4 -8. तो MS भी होगी, labeled it as negative. That's it. So if you want to, चाहे नंबर हम पॉजिटिव या नेगेटिव दिखा रहे हैं, MS भी हमेशा हमारा नेगेटिव आएगा. बिल्कुल, MS भी हमेशा 2's complement में. और सर जो MS भी होगा, ठीक है जी, और सर जो MS भी होगा वो हमेशा साइन के लिए यूज किया जाएगा 2's complement. हमें समझ आ जाएगी कि अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, और अगर ये 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर है. हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी. क्यों? क्योंकि -128 इज द लार्जेस्ट वैल्यू आउट ऑफ द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड आउट ऑफ दीज. सो हम अगर हम इस -128 में से कोई भी एक प्लस करें
लेबल को, तो आंसर नेगेटिव ही आना है। इसलिए पता चल जाएगा अगर -128 ऑन है तो नंबर जो हमारा नेगेटिव ही होना है। So the if we अगर जैसे अगर ये yes सर अगर हमें 64 के बजाय 32 हमें अगर लेना होता, सर आप स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर करेंगे? मैं दोबारा बॉक्स बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर चीजें हो। आप 32 ट्राई करके देखें। जी मैं बता 1 2 4 8 16 32 64 -128। तो अगर हमने 32 प्लस 32 दिखाना है सर -32 -32 प्लस नहीं माइनस। अगर हमें -32 दिखाना है तो ये तो ऑन होगी क्योंकि नंबर इज अ नेगेटिव नंबर। फिर आप सिंपल 128 में से 128 में 32 माइनस करो तो पता चलेगा आपको कितनी ऑन करने के बाकी बैलेंस आ जाए। सो आपके पास ये बनेगा सॉरी जी 6 और 12 में से 3 जा रहे हैं तो आपके पास 96 ऑन है। तो 64 और 32 करें तो ये 96 बनता है। तो दिस इज equals to -32. You can try check it out. -128 plus 64 and plus 32. You will be left with -32. ठीक है सर। So this is the easiest method of 2's complement, and there is another method, addition method. But for going into addition, first of all, we need to understand binary addition. So today, basically, we are going to cover binary addition and binary subtraction. Right? Now, how we are going to address it? Now, from your childhood, you understand that if you plus 6 plus 4, 2 units, so you cannot show in the unit 10. Let's suppose this is unit and this is 10. Can you show the result of 6 plus 4 only in your unit area? According to your denary system, decimal number system, from your kindergarten and junior schools, you understand this, that you cannot show 6 plus 4 into this just one box. Can you do that? No, sir. No. Why? Because the highest unit is what? 9. The highest unit is 9. We can't do it. And whenever we add 2 units, the result will be always greater than 10. Greater than 10. So, and that is what the multiple of 10 is telling us. So what you do is you bring your 0 over here and carry over here. And then 1 plus 0 is equals to 1. So that is how you show your denary number addition. In the same way, the highest value in binary system is 1. The highest value is 1, 0 and 1. So 0 is represented, let me put 1 like this. 0 is represented as 0 and 1 is represented as denary 1. So when we add one bit with another bit, keep this in mind. We are actually discussing about high and low currents. मैंने कहीं पे बाइनरी लिख दिया, कहीं पे हाई लो लिख दिया. Low current and low and high current and high and low current. In other way, I would write like 0 0 0 1 1 0 and 1 1, because I'm going to represent 0 like this, 1 like this, and 2 like this, and 3 like this. So how come the circuitry will work for addition and subtraction? This is we need to understand. So addition, how we do addition. Let me take just one bit addition system. If I want to add one bit with another, so 0 0, your answer is 0. If you have one bit of the other bit on, so your addition result will be 0 plus 1 is 1. So because there is a flow of current, so the current is flowing. So the high current is there. If you have 1 0, so let me put 1 like this, as it is a different one from this denary system 1. So 1 0 is 1.
Now what about 1 and 1? So because 1 plus 1, we have the highest thing that we can show is high current. So what to do with this? So here the same thing as generally happens. 1 plus 1 is equals to 2. And you remember from our previous table जो मैंने अभी ऊपर बनाया था that 1 sorry let me just erase this. 1 0 1 0 was actually representing 2. 1 0 was binary 1 0 is representing 2. So how do we write it? Because it is 1 bit addition, so 0 will come over here and carry will come over here. Sometimes we write carry over here, sometimes we write carry over here. So when we add the carry with the other bits, so it will become 1. So 1 plus 1 is 1 0 and it is binary equals to 2. Just like 6 plus 4, it is 10. 9 plus 1, it is 10. So any combination you get, whenever you get 1 plus 1, it is 0. And let's assume I have 1 plus 1 plus 1. 3 bits. So what will happen? Now you know that 1 plus 1 is this 0. And you add 1 to it. So this will become 1 1, which is binary 3. So let me separately add these so that we could understand this in a better way. Let's assume I have a 2-bit numbers 1 1 and 0 1. Now or let me say 1 1. So 1 plus 1 is equals to 0. We have a carry 1 over here. 1 plus 1 plus 1 is, I just mentioned this is 3. So I will put 1 over here and a carry over here. So this carry will come over here like this. So we have an answer of 1 1 0. So this is binary addition. Sir? G. सर वो मैंने 2 कॉम्प्लीमेंट वाले प्रोसेस के बारे में एक चीज पूछनी थी कि इसके जो 3 मेथड्स हैं करने के, तो एग्जामिनर हमें कोई स्पेसिफाई करेगा कि आपने इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है? नहीं, हमें एग्जाम में कोई वो कहेगा नहीं, जैसे कि हमारा अभी P1 के अंदर ऐसा नहीं होगा. P1 के अंदर हो गएगा इट्स अ 2's complement number, tell us this. It's a signed number, tell us what is the value. It is unsigned number, tell us what is the value. It is 2's complement number, tell it. Yeah, it's a decimal number, convert into binary number. इंशाल्लाह जब ये पूरा टॉपिक हमारा थोड़ा सा अभी कंप्लीट हो जाए बाइनरी एडिशन और हेक्साडेसिमल के बाद, फिर मैं आपको पूरे एग्जाम टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. सो हमें वो कोई मेथड ज़रूरी नहीं कि फॉलो. हाँ, हमारे टिप्स के ऊपर तीनों होने चाहिए कि ताकि एग्जाम में हम कोई भी सिचुएशन आए तो हमें समझ आ जाए. जो अभी लास्ट वन है जो मैंने आपको एडिशन के बाद करवाना है, वो हमें हमारे एक टॉपिक है इसी ईयर में जो पहले A2 में होता था, एंड दैट टॉपिक इज bitwise manipulation. So there when we what happens when we add things, or what happens when we do convert a capital letter into a small letter, तो वहाँ पर ये कुछ हमें प्रोसेस देखने में आएगा. थर्ड मेथड ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट, तो मैं उसको समझाऊंगा वहाँ पे, तो फिर हमें चाहिए होगा ये मेथड भी. जी ओके सर ये इसके नहीं, मतलब दोबारा से बता दें 1 + 1 वाला जो लास्ट आपने भी किया. जी, देखें अगर हम यहाँ पर 1 1 1 1 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है. 1 + 1 क्या होता है? 1 0, ठीक है ना, क्योंकि ये डेनरी 1 है, ये भी डेनरी 1 है, तो 1 + वाला हमें पता क्या होता है, 2 होता है ना. तो 2 की डेनरी वैल्यू, बाइनरी वैल्यू क्या है? लेबल्ड एज 1 and 2, सो दिस इज 2. सो ये आंसर हमने यहाँ लिखना है, लेकिन ये 2 बिट्स हैं और यहाँ हमने 1 बिट के लिए ये डेनरी है, ये कैसे पता लगेगा? सॉरी सर ये डेनरी है, ये पता कैसे लगेगा? ये डेनरी या ये डेनरी? सर ये 10 जो है, नहीं, ये 10 नहीं लिखा, ये 1 0 लिखा मैंने. इसके ऊपर लेबलिंग की हुई देखो, 1 2 4 8 16, जब तक करते आ रहे हैं बाइनरी के अंदर.
बेस 2 लिख देता हूँ यहाँ पर, चलो दिस इज बेस 10। ठीक है सर। ये दो बाइनरी नंबर है ना, इट्स अ बाइनरी नंबर एंड दिस इज आल्सो अ बाइनरी नंबर, एंड व्हेन आई एम एडिंग तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि इफ दिस इज बेस 2, दिस इज बेस 2, so this simple 1 is decimal 1 decimal 1, so 1 plus 1 is equals to in base 10. So what is 2 base 10 represented in binary? It is 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1. So this is 2 0 1 and 2 3. ये देखें क्या आ रहा है, ये दो को हम बाइनरी में 1 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ 1 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस 1 0 में से 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 हमारे पास कैरी हो जाएगा, यहाँ लिख लें या यहाँ लिख लें, जहाँ लिखना है। नाउ 1 plus 1 1, ये 3 है, हमें पता है कि 3 is equal to this 1 1, so 1 is here and 1 is carry, तो ये लास्ट 1 रह गया। अगर हमारे पास बिट्स हैं तो ये 1 भी यहाँ लिखा जाएगा, अगर बिट्स नहीं होंगी तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। Because I mentioned when we started our first lesson, there is limitation, because we'll have सर either, मतलब अगर 2 बिट होगा हाँ तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा और हमारा रिजल्ट एस्टिमेटेड हो जाएगा। फिर अभी आगे आ रहा है, लेट मी ठीक है सर। हैव 2 डेसिमल नंबर्स। अगर एग्जामिनर कहता है कि ऐड 2 प्लस, बहुत सिंपली करता हूँ, 2 plus 4 2 plus 12 कर लेते हैं, 2 plus 12। सो आपने डायरेक्टली आंसर नहीं देना इसका, आपने ये नहीं करना 2 plus 12 is equals to 14 और 14 को आप बाइनरी में दिखा दें, दिस इज रॉन्ग। what you have to do in paper, first of all you'll say 2 in, बल्कि आप लिख दें अगर आप लिखना चाहते हैं अपनी आसानी के लिए एक्सप्लेनेशन के, पहले आप 2 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 8 16 32 64 minus 128। तो एग्जामिनर मेंशन भी किया होगा कि डू दिस एडिशन इन एज 2's complement। सो 2 को जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो वो बनेगा मेरे पास 1 0 and the rest are 0। Now what about 12? In the same way I'll show 12, so 12 will be 8 and 4 on, and same way I'll put those boxes over here, and then I'll show the addition result like this, for example. So now I'll add one bit by bit. 0 plus 0 is equals to 0, 1 plus 0 is equals to 1, 0 plus 1 is equals to 1, 0 plus 1 is equals to 1, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। Simple, इतनी आसानी से addition होगी। And you know that 12 plus 2 is 24, and if you add these up, you know this is 12 plus 2 is equals to 14, so you know that 8 plus 4 plus 2 is equals to 14। this is how you do it। सर एडिशन करने के बाद जो आंसर है वो बेस 10 की फॉर्म में आ रहा है, यही हो रहा है ना? नहीं, यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दे दिया, फिर हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ ये कन्वर्ट करके हम दिखा रहे हैं कि क्या होगा, क्या कंप्यूटर के अंदर 2 इस पैटर्न में कन्वर्ट होगा सर्किट में, and 12 will also be represented as low high, this representation, 1 will be represented as this in a circuit, second will be represented with low high current like this, and the addition, a process of addition जो कि हम इंशाल्लाह अपने A2 में पढ़ेंगे जाके, एडिशन कैसे होती है उसके 2 सर्किट पढ़ेंगे, एक हाफ एडर पढ़ेंगे और एक फुल एडर पढ़ेंगे, छोटा सा एक टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। तो वहाँ हम देखेंगे कि ये कैलकुलेशन कैसे हो रही होंगी, सर्किट पे ऊपर करके देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा थोड़े सर्किट डिजाइनिंग सर आप एक दो हफ्ते में बता देंगे जी। सो 2 को पहले मैंने रिप्रेजेंट किया लाइक दिस, लेट मी गिव इट रेड कलर नाउ। पहले मैंने 2 को कलर बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर मैंने 12 को बाइनरी में कन्वर्ट किया और एक एक की 1 by 1 बिट की एडिशन कर ली। 0 plus 0 is equal to 0, 1 plus 0 is equal to 1, 0 plus is equal to 1, 0 plus 1 is equal to 1, and the rest are 0। Now let me take a little सर अगर 1 1 आ रहा होता तो हम उस तरह करते
अभी मैं अब दिखाता हूँ, कोई मैं सैम्पल्स वैल्यूज ले लेता हूँ ताकि कुछ कैरीज भी हो जाएं और फिर एक लिमिटेशन को भी हम सर देख लेकिन लेते ये हैं। आपने ब्रेक डाउन करके ही दिया, डायरेक्ट 14 लिख लेते, ये आप ब्रेक डाउन नहीं, करके हमने यही तो दिखाना है कि इंटरनली क्या हो रहा होगा। हम दिखा सकते थे डायरेक्ट करके, लेकिन मार्क्स कट हो जाएंगे, तो बिकॉज एग्जामिनर वांट्स टू सी दैट यू अंडरस्टैंड बाइनरी एडिशन प्रोसेस। वो तो 14 रिप्रेजेंटेशन हो जाती, 2 + 12 आप 14 कर लेते, 14 को आप बाइनरी रिप्रेजेंट कर देते, वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी। एग्जामिनर वांट्स टू सी दैट यू अंडरस्टैंड binary addition and binary subtraction also. So let me take an example ठीक है सर। of another number, not much difficult. Zero, 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 and 1, 1. Now you know that 1 + 1 is equals to 1, 0. So the 0 comes over here, and this one goes as carry. I have a habit of writing carry over here, unlike in your maths where you write over here. So 1 + 1 is equals to 0. 0 plus this 1 will make it 1, 1. So my answer will be, after this addition, will be 1, 1. So this 1 I will take right over here, and this 1 is my carry. So now 1 + 0 is equals to 1, and 1 + 1 makes it 1, 0. So it will be 0 over here, and carry over here. And here 0 + 0 is 0, 0 + 1 is equals to 1, and the rest are zeros being put over here. So this is how we show, how we show carries. Now let's see limitation. What I'm saying about limitation? Let me show you another interesting addition process. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. I have a number like this over here. Just I want to keep it as simple as possible. So 0, let me just put it, 0 + 0 is equals to 0, 0 + 0 is equals to 0, 0 + 0 is equals to 0, 0, 0, 0. Now look at this. And let me just show you that what these numbers are actually. 32, 64, minus 128. So minus 128 plus 64, this becomes 4 minus 64. ये अगर इन दोनों को हम देखें, ये हमारे पास बन रहा है -64 और ये भी -64. अब इनकी एडिशन कर रहे हैं, तो आंसर क्या आता है? देखिए 1 + 1 is equals to 0. कैरी क्या आ गया? 1. 1 + 1, 0 + 1, आंसर क्या आ रहा है? 1 1. 0. ठीक है, तो आंसर है 1, 1. सो -64 प्लस -64 क्या बनता है हमारे पास जब हम इसको यहाँ 1 लगाते हैं? लास्ट स्टेप रिपीट कर देंगे. 1 plus this one and this one is added, so answer is 1, 0. क्योंकि मैंने बताया था 1 + 1 आंसर होता है 1, 0. So 0 will come over here and the 1 is going to be carry. So again we have 1 + 1 is equals to this, and that is added with the carry also, which will become 1, 1. So 1 will go into this box and our 1 will go out as here. Now we do not have 9th bit, so this is actually discarded. This is discarded, but the answer is -128. Answer is -128. Yes, -64 and -64 gives us -128, but this thing is actually got discarded. इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं. Let's suppose मैं यहाँ पर
2's कॉम्प्लीमेंट नहीं लेता, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मैं अब 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं ले रहा, सिंपली 1 2 4 8 16 32 64 और 128 लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक नंबर है 128 और दूसरा है मेरे पास क्या कह लेते हैं, चलो 128 ही ऐड कर लेते हैं इसमें। 128 में 128 ऐड करते हैं, देखते क्या आता है आंसर। 0 0 0 0 0 0 0 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0 आता है, तो 0 हमारा यहाँ चला गया और 1 कैरी हो गया, और क्योंकि 9th बिट नहीं है तो इसलिए ये डिस्कार्ड हो गया। और आप देखेंगे हमें आंसर क्या आ रहा है 128। नाउ you know that the highest value that we can represent in 8 bits is 255. Do you remember all? Yes. Yes. So we can, how can we represent 128 plus 128, which is equals to 256? We cannot represent 256. So the computer actually discarded the last bit and the answer is shown as 0. So here, this is why, because of the limitation. This is an incorrect answer. Actually, the answer should have been 256, but because we have limitations, we cannot represent something bigger than our hardware allowed. So these things happen. And now the last thing is binary subtraction. This is also very easy. And how we do binary subtraction? Let's suppose if examiner says subtract 12 minus 2. Subtract 12 minus 2. Let me stop this because we're left with only 1 minute for our class. So I'm starting the Zoom meeting again. तो आप लोग दोबारा ज्वाइन करें। Okay जी। Now by subtraction, Sir? if I want, yes please। इसका 1010 है। हाँ बिल्कुल, करेंगे कैसे? हमने ऐसे नहीं सर करना, पहले हमने ऐसे नहीं करना। 12 minus 2 is equals to 10 और हम 10 को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दें phase 2 में। No, this is not the way. But you have to do same like I did in addition. First you show 12 as as 1 2 4 8 16 32 64 minus 128. So you show 12, which is 1 1 1 1 0 0, and then you show minus 2. Now you know to show minus 2, you have to take 2's complement. So you, whichever method you know, you have to work with that. One way is that 128 में से you subtract 2, you are left with 120. Let me add 126. So you switch on minus 128 and then you switch on 64 and 32 and 16. The other way is you can find out what is the value of positive 2. So you know that positive 2 is this. So whichever method you can do it quickly, and that's up to you. Practice तीनों की कर लें. And now you understand 1 1 1 1 1 and 1 1 0. This is equals to 126. क्योंकि पहली 1 को छोड़ के बाकी सारे मैंने flip कर दिए. So this is my 2's complement. My computer has gone a little slow. सर आपने 12 minus 2 लिखा हुआ है। एक मिनट यार, my computer is not responding. जी, what are you saying बेटा?
सर 128 माइनस 2 ने आपने 12 माइनस 2 लिखा है मैंने ये 12 है ना, दिस इज इक्वल टू 12, दिस इज 12 and this is minus 2. If you want to check, minus 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus अच्छा वो 8 2's कॉम्प्लीमेंट plus में 4 जी सब्ट्रैक्शन की है plus 2. जब आप इस सब सारे को ऐड करेंगे, so you will be left with minus 2. So this is the ठीक है representation of minus 2. So अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि this is minus 1. So this is then minus 2. So now let's add these. So when we add, so हमारी subtraction automatically हो जाएगी because one number is negative, the other is positive. So 0 plus 0 is 0. This is 1. 1 plus 1 is equals to 0. Carry 1. Then 1 plus 1 and plus 1 is equals to 1. Carry 1. 1 plus 0 is equals to 0. Carry 1. 1 plus 1 is equals to 0. Carry 1. 1 plus 1 is equals to 0. Carry 1. 1 plus 1 is equals to 0. Carry 1. So 8 plus 2 equals to 10. And you know 12 minus 2 is equals to 10. So that is how we do binary subtraction. Let me just put down the steps of binary subtraction, and then over your Google class I'll put an assignment today for your practice of binary representations and binary addition and subtraction. So so to have a binary subtraction, one step is to convert numbers in binary 2's complement and then add. So automatically subtraction will occur. Now let's come on to the last method of 2's complement that I want to show you, that if you want to convert a number into 2's complement and you want to see the third method, the third method is also very easy. Let's suppose you want to show minus 2 in 2's complement binary number. So what you do is, the first step is very easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. To find out the value of positive 2, which you understand is this. Now, take the 1's complement, which is flip all. So this is your first step. Second step is to flip all. So I'll make it 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, and 1. So this is first step, and then my third step is add 1 to it. So when you add 1 to it, you will see automatically it will give us the same result which we just shown above. 1 plus 0 is equals to 1, 0 plus 0, 0, 1 plus 0 is equals to 1, 1, 1, 1, 1, and 1. So this is equals to minus 2 in 2's complement. So you see this is same as above over here. All ones with a 0. So all ones, sorry. I said कि हम यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा गलती कर गया हूँ, यहाँ पर हम 1 ऐड करेंगे. ये मैंने कहा था थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है. थर्ड स्टेप में वी हैव टू ऐड 1. So 1 plus 1 is equals to 0, carry 1, and 0 plus 1 is equals to 1. कंफ्यूजन तो नहीं हुई है? मैं दोबारा कर दूं, कंफ्यूजन तो नहीं हुई है? बता दें मुझे. Let me first explain the steps again. फिर मैं एक और एग्जांपल करता हूँ. First convert, this is positive 2, convert the 2 into binary number, and then flip all bits
and third step is add 1. So plus 2 is equals to this in binary. I've flipped all bits and then I've added. This process is also important for us because we might see kind of bit manipulation in our one of the topic that comes in at the end of our syllabus. Let me give another example. Let's say I want to convert कोई नंबर बोले 13 कर देते हैं -13, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि 13 को हम शो करें, तो 13 होगा हमारा 1 प्लस 8 + 4 12 होता है, सो 1 2 4 ऑन हो जाएगा। 12 + 1 हाँ जी, एक मिनट, 1 ऑन हो जाएगा। एक मिनट, 1 + 2 -13 है कि 13 है? ये 13 है बेटा। सो 1 2 3 4, so 1 2 4 8, 8 + 4 + 1 is equals to 13. तो ये अब 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, 16 32 64 so on. So 8 + 4 12 + 1 13. Now this is my first step जो मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। सेकंड स्टेप flip all. So 1 will become 0, 0 will become 1, 1 will become 0, 1 will become 0, and these will become 1. Now third step is add binary 1. So binary 1 is equals to this 1 0 0 0 0 0 0 0. इसकी जब हम एडिशन करेंगे तो 0 + 1 हमारा आंसर आएगा 1, 1 + 0 is equals to 0, and 0 0 1 1 1 ये एडिशन होगी। अब ये हमारा -13 के इक्वल होता है। इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक, -128 में से 64 माइनस करें, 32 माइनस करें, 16 माइनस करें और 1 माइनस करें, हमारे पास आंसर इंशाल्लाह -13 आएगा। So this is what our binary subtraction, addition, and the last method of okay. There's a mistake, and that is this one. It happens because it's been all day. It's in the front of my laptop and recording and posting posts, so lots of stuff is being happening. So 0, let me just highlight it with मेरा लैपटॉप बिल्कुल स्लो चुका हुआ है क्योंकि एक तरफ वो कंपाइल कर रहा है लास्ट वीडियो को और 2 वीडियो से ऊपर से ये लेसन भी चल रहा है। 0 + 1 is equals to 1, and then 1 + is equals to 1, 0 + equals to 0 0 1 1 1. So now it is correct. So if you add up -128, 64, 32, 16, and 2 and 1, this is equals to -13. सर ये तीसरी जो थर्ड जो लाइन है यानी 0 0 0 मैं क्या नाम है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से पढ़ रहा हूँ 1 और बाकी आगे सारे 0 हैं, ये किस तरह है? ऐड बाइनरी 1, ये वाली मुझे समझ नहीं आई। देखिए ना, ऐसे समझें कि अगर हमारे पास ऊपर हमने लिखा था +13, ठीक है, +13 को हम फ्लिप कर दें तो हमारे पास ये वाला ये +13 था, इसको हमने फ्लिप कर दिया तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसके अंदर हमने 1 को ऐड कर दी ना, 1 क्या होता है 8 बिट में बाइनरी 1 कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 हम लिखते हैं ओके सर, ओके समझ रहा हूँ। 0 0 सिर्फ 0 1 0 ऐड 0 0 0 1। तो मैंने सिर्फ 1 ऐड किया है इस पूरे आंसर के ओके अंदर। जब 1 ऐड किया तो वो हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट बन गया। ओके सर, थैंक यू। एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, एक्चुअली आप ये समझें -14 आ रही है, तो -14 + 1 हम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली -13 बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर आवर टुडेज लेसन। इंशाल्लाह I'll be sharing this screen on the Google Class.